एक बार फिर से स्वागत है आपका दोस्तों YouTube चैनल में। आइए देखते हैं कि हम पेरिस में आखिरी सुबह हमारे सफर का कैसे स्पेंड करते हैं। हमारा सफर पेरिस का आज यहीं खत्म होने वाला है और हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन मिलान, मेरे घर। ये पहली बार होगा जब मेरे पेरेंट्स मेरे घर आएंगे और मेरा कॉलेज भी एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम चलते हैं हमारे सफर में। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम होटल से निकलने की तैयारी में हैं। आप देख सकते हैं कि लगेज लोड की जा रही है, तो चलिए चलते हैं। पेरिस रोशनी का शहर, आपकी सुंदरता और आकर्षण बस दर्शनीय स्थल। आईफिल टावर से लूव्रे म्यूजियम तक आपकी कला और संस्कृति की अपेक्षा करना असंभव है, लेकिन अब अलविदा कहने का समय आ गया है। As we journey through Paris to Milan, the landscape changes as we span. From the city of lights to the Italian lakes, our adventures will be filled with sights and sounds that make. In Paris, we will stroll along Seine, taking in the sights of Notre Dame and Eiffel Tower's fame. The aroma of fresh croissant and café au lait, for which we will return again. हम जा रहे हैं पेरिस के गैरे दे लियोन स्टेशन, और क्योंकि यहाँ सुबह देर से होती है तो बाहर का नजारा कुछ धुंधला सा दिखेगा आपको। Oh Paris, how sweet it is to travel early before the dawn, to see the streets bathed in moonlight, and watch the sunrise as the city slumbers. The streets are quiet and still. The air is crisp and clear. The morning dew is chill. And in the hushed and empty lanes, one can feel the pulse of history that remains. As the first blush of dawn ignites the sky, the city slowly wakes and comes alive to the sounds of morning bells that chime. दोस्तों, ये तो था हमारे पेरिस टूर का आखिरी दिन, पर ये तो बस एक शुरुआत है हमारे यूरोप ट्रिप का। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे साथ बने रहिए आगे का वीडियो देखने के लिए। हम बस पहुंचने ही वाले हैं स्टेशन। तो फाइनली हमारे सामने है ये क्लॉक टावर। गैरे दे लियोन स्टेशन का ही एक पार्ट है और कितना ग्रैंड दिख रहा है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं सचमुच में कि इस स्टेशन अंदर से भी कितना सुंदर होगा। हम हैं पेरिस के वन ऑफ द 6th लार्ज मेन लाइन रेलवे स्टेशन गैरे दे लियोन में, और शायद आपको इससे पहले ऐसा व्यू किसी भी दूसरे वीडियो में नहीं मिलेगा किसी भी स्टेशन का। तो चलिए चलते हैं। ट्रेन हमारी कुछ वक्त में है, तब तक हम आपको स्टेशन दिखा देंगे। चलिए चलते हैं। ये है गैरे दे लियोन स्टेशन का इंटीरियर। सुबह सुबह आपको इंडियन रेलवे स्टेशन की तरह चाय शायद नहीं सुनने मिलेगा, पर हाँ, नजर जहां तक जाए कॉफी जरूर दिख जाएगा आपको। हम अभी प्लेटफॉर्म की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हमें अभी तक हमारा प्लेटफॉर्म नंबर नहीं पता है, तो हम वेट कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। एनीवेज दोस्तों, हमारी ट्रेन आ चुकी है स्टेशन पर, इसीलिए अब हमें जाना पड़ेगा प्लेटफॉर्म की ओर। ये हमारी पहली ट्रेन राइड होगी पेरिस टू मिलान, तो चलिए ये भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। ये स्टेशन कम एयरपोर्ट ज्यादा दिख रहा है। यूरोप में आप कहीं भी चले जाइए, वहाँ के रेलवे स्टेशन शानदार होते हैं। सो नीट एंड क्लीन एंड इतने ऑर्गेनाइज्ड हैं कि आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो स्टेशन है गैरे दे लियोन, इसकी हम हिस्ट्री की बात करें तो लियोन स्टेशन 1847 से अंडर कंस्ट्रक्शन में था
और इससे आधिकारिक तौर पर 12 अगस्त 1849 को पेरिस से मॉन्ट्रो तक रेलवे स्टेशन नाम से जनता के लिए खोला गया था। हाई स्पीड ट्रेन से लेके रीजनल सर्विसेज ट्रेन भी यहाँ रुकती है। चलिए देख लेते हैं कि हमारी ट्रेन कौन सी है। तो ये बहुत ही बड़ा स्टेशन है और यहाँ सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छा है, और क्योंकि हम सुबह सुबह स्टेशन में पहुँच गए हैं तो हमें ज़्यादा क्राउड नहीं मिला। हालांकि हमें क्राउड कहीं भी ज़्यादा नहीं मिला। अब हम चलते हैं टिकट चेकिंग की ओर। तो यहाँ काफ़ी मतलब सिस्टमेटिक तौर से है टिकट चेकिंग भी। आप ऐसे ही नहीं कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में जा पाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो अब चलेंगे ट्रेन की ओर। ये है हमारा आज का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। चलिए देख लेते हैं कि हमारा आज का सफर कैसा रहेगा। यस, चलिए। तो काफ़ी लंबा सफ़र होने वाला है हमारा दोस्तों, पर आप ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो अभी बाकी है। वैसे एक बात बताना तो भूल ही गई कि आप जब यूरोप में ट्रैवल कर रहे हैं तो लगेज कम से कम रखने का सोचिएगा, क्योंकि यहाँ के किसी भी कंट्री में आप जाते हैं तो आपको लगेज के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप लगेज ट्रॉली बैग्स के बदले हैवरसैक रख सकते हैं, और इस बात को लाइटली मत लीजिएगा क्योंकि ये अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। हमारा ट्रेन यहाँ आप देख सकते हैं। एक फाइनल व्यू ट्रेन का। So here's to Paris and Milan, two cities so different yet so grand. May we always remember the memories we have made and cherish the experiences that will never fade. The Louvre with its timeless art, the suppers with its enigmatic heart. We have traversed through the ages and witnessed history's engaging stages. Paris, you have captured our hearts, your charm, your elegance, your passionate arts. We leave with memories that will last a lifetime and a yearning to come back to once again dine. As we journey on to our next destination, we will carry with us the essence of your nation. Thank you, Paris, for the memories you have given. May our love for you never be forgotten or driven. Hoping we would meet again. Through the winding roads and skies above, our hearts remained filled with love. For Paris, our cherished destinations, we'll hold on to these memories with affection. From quaint cafes to the haute couture, we'll never forget the charm that we adore. The romance of the scene and the fashion of the streets, we will miss the experiences that we have had in our hands. As we journey on to places yet to see, we will always cherish the moments that will forever be. Thank you, Paris, for the memories you have given. Our love for you will remain constant, never driven. Until we meet again with our open arms, we will hold on to the magic of your charms. And as we travel through life's winding way, we'll remember our journey every single day. पेरिस से मिलान तक ट्रेन से ट्रैवल करना यूरोप की सुंदरता का अनुभव करने का एक शानदार तरीका है। ये ट्रैवल फ्रांस और इटली के कुछ सबसे सुंदर जगहों में ले जाएगा, जो पहाड़ों, डाक की बारियां और रास्ते में आकर्षक शहरों से गुजरते हुए जाएगा। ये लगभग 735 किलोमीटर्स की दूरी तय करते हुए फ्रांस और इटली के कुछ मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस से होकर गुजरता है। टिकट की हम बात करें तो वो डिपेंड करता है आपके द्वारा चुने गए ट्रेन के ऑप्शंस के आधार पर, जो पेरिस से मिलान तक की यात्रा की टिकट अलग अलग हो सकते हैं। हाई स्पीड ट्रेन लगभग 7 घंटे में पेरिस टू मिलान की दूरी तय करती है, जबकि नॉर्मल जो ट्रेन है वो पेरिस टू मिलान की दूरी 10 घंटे में तय करती है। और जैसा कि मैंने कहा कि टिकट डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस पे, बट एक ओवरऑल आइडिया देने के लिए ये ट्रैवल
करने की कीमत अराउंड 70 यूरोस से लेके 150 यूरोस तक होती है। ये ट्रेन पेरिस से मिलान एल्प्स को पार करते हुए इटली में एंटर करती है। मिलान में पहुंचने से पहले ये ट्रेन इटली के ग्रामीण इलाकों के बीच से ले जाती है, जो पहाड़ों, झीलों और आकर्षक मध्यकालीन शहरों से गुजरती है। As we step into the land of the Renaissance, a piece of art, culture and elegance, we are greeted by a land so fine, a place where history and beauty intertwine. Italy, the land of the poets and the painters, where artistry and craftsmanship reign, the land where music and opera soar, and where the taste of exquisite cuisine is never a bore. From the rolling hills of Tuscany to the winding canals of Venice, Italy captures our hearts and souls, and that takes us on a journey that never grows old. The Colosseum, the Vatican and the Pantheon remind us of the past that still stands strong. Michelangelo, Da Vinci, Botticelli, their masterpieces inspires us daily. In Italy we discover the beauty of life, the passion and romance that's woven in strife. A land that beckons us to explore, a place that we will always adore. So let us raise a glass to Italy, a land that fills our hearts with glee. A place where dreams come true and where the beauty of life is renewed. As we step into the journey of Italy, here we enter the land of Renaissance, the beauty, the sophistication, the fashion and everything else. Let us embark on this journey. हम अभी ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं और ये यात्रा पेरिस के गैरे दे लियोन स्टेशन से शुरू हुई थी और अभी हम आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम इस रूट को फॉलो कर रहे हैं। करीबन अभी 9 बज रहे हैं और हम फ्रांस के कंट्री साइड से होते हुए स्विट्जरलैंड क्रॉस करेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है बाहर का, कंट्री साइड का, फ्रांस के कंट्री साइड का। एंड चलिए देख लेते हैं। O French countryside, so quaint and serene, with rolling hills and valleys so lush and green, your winding roads and paths so rustic and old, lead to hidden treasures waiting to be told. Your fields of lavender so fragrant and bright, fill the air with a scent so pure and light, and golden sunflowers standing tall and proud seem to bow to the sun with a humble crowd. Your vineyards with rows of vines so neat and trim produce wines that make the heart sing and brim, and old chateaux with their majestic towers stand as a symbol of your rich and storied powers. Your villages with their narrow streets and squares bear witness to a life that's so calm and fair, and your markets with their fresh produce and cheese are a delight to the senses and so easy to please. O French countryside, you're a balm to the soul, with your simple pleasures and your tranquil role. You remind us of a life that's worth living well, and we vow to cherish you forevermore and tell. O French countryside, so pure and serene, thy rolling hills and meadows so green, thou art a sight to behold, a true delight, a place where one can find peace inside. The power of nature is felt in thy land, a force that can make one truly understand. That is the midst of chaos and confusion, the beauty of life lies in thy seclusion. The higher the power, the higher the day. In thy embrace all worries fade away.
Thy fields of lavender and sunflowers can make one feel the beauty of thy powers. Thy vineyards that stretch across the horizon are a reminder of the sweet nectar of life's raisin. And thy way, the vines twist and turn, shows the beauty of nature and how it can discern. O French countryside, a treasure to behold, a true wonder, a story to be told. Thou art a place where one can find peace, and in thy embrace all worries can cease. O French countryside, so pure and serene, thy fields of green and rolling hills a dream, thy tranquil beauty a sight to be behold, a place where nature's story can be told. The babbling brooks that meander through, the fields of wheat and wildflowers that grew, the trees that rustle in the gentle breeze, are all a part of thy nature's beauty so at ease. The fragrance of thy lavender fields and the sweetness of thy orchards such yields, thy grapevines that produce the finest wine, all contribute to the wonder that is thine. Thy quaint little villages with their old world charm, and the grandeur of the castles without harm, all tell the tale of thy rich history, a place of culture and a land of mystery. O French countryside, a place of rest and peace, where the soul can find solace and release. Thou art a true gem, a treasure to cherish, a reminder of beauty that nature can furnish. O Switzerland, a land of beauty and grace, with snow-capped mountains and picturesque lakes, a place where nature and man coexist, and crossing its borders in a travel bucket list. From Geneva to Zurich, across the land, I traverse the country with awe in my hand. The Alps majestic, towering high, a sight that fills my heart with a sigh. The journey begins and I feel the thrill as I pass by quaint villages, tranquil and still, with shallots and cows, a Swiss cliché, but oh so enchanting in every way. The train ride is smooth and the views are grand, as I watch the landscape change from valley to strand. The Rhine falls roaring, a sight to behold, and the vineyards rolling, a story untold. In Bern I explored the old town's charm, with cobblestone streets and a clock that alarms. The Bear Pit alive, a Swiss icon, and the Parliament building, a politician beacon. Lucerne's beauty takes my breath away, with its chapel bridge and the Lyon monument on display. The lake shimmers and the swans glide, as I soak in the atmosphere, feeling alive. As I continue my journey, I reach Interlaken, with the Jungfrau towering, a sight that won't waken. The valleys lush and the peaks sublime, as I wander and explore, soaking in every rhyme. Finally, I reach the end of my trail, as I bid farewell to this land of tales. But my memories remain etched in my mind of crossing Switzerland, a journey one of a kind. O Switzerland, how you have captured my heart with your scenic beauty and your hospitality art. I leave with the promise to return again, to cross your borders and explore your terrain. क्या आप मिलान के आकर्षण का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? तो चलिए चलते हैं। ये उत्तरी इटली में स्थित एक खूबसूरत शहर जो अपने ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है।
मिलान वो शहर है जो हाई फैशन के लिए जाना जाता है, पर यह भी सच है कि मिलान एक ऐतिहासिक शहरों में गिना जाता है। ये एक प्राचीन शहर है जो लगभग 400 बीसी में सेल्टिक इंसर्ब्स द्वारा स्थापित किया गया था। 222वीं सदी बीसी में रोमन्स ने इस सेटलमेंट को कब्जा कर लिया। History tells us that Mediolanum, the Latinized form of Mediolanum, meaning sanctuary, was founded by the Insubri Celts in 590 BC. मतलब कि मिलान को फाउंड किया इंसब्री सेल्स सेटलमेंट ने। इंसब्री सेल्स जो कि एक प्राचीन सेल्टिक पॉपुलेशन थी जो इंसब्री में बसी थी, वो आज के दशक में लोम्बार्डी के नाम से प्रसिद्ध है और ये लोम्बार्डी रीजन है मिलान में स्थित। As we head on to Milan, let's see what it has for us in plan. Milan, oh Milan, city of style and charm, your beauty and elegance never cease to disarm. From the fashion boutiques to the history Duomo, you captivate all who visit and never let go. Your streets are alive with bustling energy as locals and tourists alike explore with synergy. The aroma of espresso and fresh baked bread fill the air and tickle the senses, it must be said. Galleria Vittorio Emanuele too, a magnificent sight, with its soaring arches and ornate delight. La Scala, a world-renowned opera house, hosts the most beautiful performance for the aroused. Milan, the birthplace of Leonardo da Vinci, whose genius continues to inspire and mystify. The Last Supper his masterpiece adorns. The walls of Santa Maria delle Grazie, a treasure that won't be forgotten. A symbol of strength and determination aplenty. San Siro Stadium, the home of Rossoneri. A place where dreams come true, where passions carry with you. You inspire us all with your endless innovations, from the latest in fashion to the most cutting-edge design. You lead the way and set the trends that define. So here's to you, Milan, oh Milan, my ode to thee, a city of wonder and endless possibility. May your star continues to shine bright as you inspire us all with your resplendent light. हम अब बस कुछ ही देर में हमारी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं दोस्तों, और मैं आपको एक स्थानीय के रूप में एक्सप्लोर करवाने वाली हूं कुछ बेहतरीन चीजें मिलान में। मिलान की स्ट्रीट्स, शॉपिंग और कुछ अनोखी चीजें। मिलान है इटली का एक ऐसा शहर जो फैशन राजधानी के साथ साथ वास्तव में एक खूबसूरत इमारतों का घर है। लेकिन शायद मिलान में रहने का सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ चाहे आप एक आरामदायक कैफे में एक कैपुचिनो की सिप ले रहे हो या दोपहर में धूप में जिलेटो का आनंद ले रहे हो, मिलान में डाइनिंग करना एक ऐसा अनुभव है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। बेशक मिलान में रहना अपने आप में ही चुनौतियों से भरा है, लेकिन उन लोगों के लिए जो इस अविश्वसनीय शहर की ऊर्जा और उत्साह को गले लगाने के लिए इच्छुक है, मिलान उनके लिए एप्ट डेस्टिनेशन है। तो चलिए, हमारे सफर का अंत यही होने वाला है, पर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। O journey that leads to Milan, your path has been both long and grand. Through hills and valleys, towns and fields, you have carried us with tireless zeal. Your wheels have spun without a rest, as we have admired each passing crest, and felt the wind upon our face in moments of both peace and grace. We have seen the world in all its glory, through your windows, dear friend and story, and felt the pulse of every place, in every mile, every trace. O journey that ends in Milan, your final stretch
is bittersweet. For though we long to see the end, we will miss the joy of every bend. Here we are, reaching Milano Central Station. Finally, our destination is here, my dear friends. O winding road, how we adore your every curve and bend galore. The way you twist and turn and weave makes every moment a sight to believe. With every twist a new surprise, a vista grand, a scenic guise. Your beauty steals our breath away and fills our hearts with pure dismay. For as we travel on this path, we know that soon we will see the last. And though our journey's end is nigh, we will miss the joy of every high. Your winding path has been our guide, a faithful friend through every stride. And though we will reach our final bend, we will cherish you until the end.